हम्म, अमेरिकन। Sooner sustainable. Da, 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 da. ऐसा कुछ होता है क्या? Fine. होता तो है। ऐड किया जाए। सो नेक्स्ट, अगला बनता है।
ये कर लिया हमने। ये क्या हुआ? अबे, सही कर रहा हूँ मैं? एक बार चेक करने में। ये जी, डिटेक्शन। आई होप मैं सही लिख रहा हूँ। बहुत टाइम बात कर रहा हूँ मैं DSA। समझ रहे हो? क्या चलो चैट में कुछ है? यो, सब बड़ी, हेलो 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 हेलो। हेलो, क्रेजी स्टफ, एक्साइटेड। यस, लेट्स गो। आवाज आ रहा है? मेरा आवाज आ रहा है? अरे यार, ये चैट का कुछ करना है। तो अगर मैं छोटा कर दूं। अरे यार, चैट कैसे देखूं मैं? यप यप, आवाज आ रहा है, सही है। Nice। कुछ करना पड़ेगा इसका, कहीं पे लगाना पड़ेगा। समझ रहे हो? नहीं तो बार बार ये हो जाए। ऐसा करके, अगर मैं इसको ऐसा कर दूं। ओके, नाइस। अब मेरे स्क्रीन पे कैसे दिखता है? तो थोड़ा सा बीटी हो गया स्क्रीन पे, पर चले। लो, ऐसे करके देख लो। मेमोरीज, क्रेजी स्टफ, यस यस। क्रेजी स्टफ। ये ऐसे करके देख लो कि क्या करना थोड़ा बहुत। ऐसे ही, यस। आओ आओ आओ, किया जाए। हम क्या करेंगे? ये साइज है ना, तो हम साइज लेवल से 1 तक चला देंगे। और एक मिन और एक मैक्स ले लेते हैं। फिर हम चलो, मिन को हमेशा क्या रखना है? हिंट मैक्स। मैक्स पे क्या रखना है हमेशा? हिंट नहीं। समझ रहे हो? और साइजेस का कोई दिक्कत नहीं है ना, एक तो है ही अपने। यार अरे भाई, हाँ, तो यहाँ पे कंपैरिजन की जरूरत नहीं है। is equal to this mean is equal to, है ना? हम क्या करेंगे? इसको मीन एन लिख देते हैं, मीन नंबर लिखेगा और मैक्सिमम लिख देते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे मीन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। चलिए, मीन, कॉमा, ARR, सही जा रहे हैं हम लोग। और मैक्स एन इज इक्वल टू मैक्स ऑफ मैक्सन कॉमा ARR, इजी। और बस दैट्स इट, हमें रिटर्न कर देना है एक पैर। जिसमें क्या क्या होगा? उसमें होगा हमारा मैथ्स। सही कर रहा हूँ मैं दोस्तों? यप यप यप। लेट्स सी, अगर मैं सही कर रहा हूँ तो अभी पता चलो। ये टैक्स, यहाँ टैक्स में लग गया। लेट मी चेक।
सुना। ठीक है, मैक्स वाज नॉट डिक्लेयर्ड इन द स्कोप, ठीक है। मैक्स एन, मीन एन, ठीक है। मीन ओ, यहाँ पे मैक्स एन है। और कहाँ पे दिक्कत है? आई थिंक दैट्स इट। और हमको पैर में भेजना है ना, ठीक है, पैर में भेज दिया, कोई दिक्कत नहीं। ओके, आई थिंक दैट्स इट। सुना। ओके, डन 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 डन, हम यहाँ पे अपडेट कर देंगे कितने हुए हमारे प्रोग्रेस। प्रोग्रेस, प्रोग्रेस, प्रोग्रेस। टू, टू डन। नाउ वी गो टू थर्ड। Given an array ARR and an integer k where k is smaller than the k is smaller है, ठीक है, तो इजी हो गया ये टास्क। टू फाइंड द k स्मॉलेस्ट, ये तो बहुत इजी है ना। क्या लगता है आप लोग को, इजी है या नहीं है? ऐसे ही लगता है, ऐसे मैं भूल चुका हूँ ये सब। ओके, मैं सही लिख रहा हूँ। ARR डॉट एंड, फिर हम यहाँ पे रिटर्न कर देंगे k ARR डॉट k minus, am I right? Let's check. Let's check. Okay, let's submit. Let's try to submit. Oh, 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 okay. Submitted, submitted, submitted. Okay, nice, nice. We are good. वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए। यस सर, वक्त भी बदल गया, जज्बात भी बदल गए। प्रोग्रेस।
आज हमें करने होंगे 10 सवाल। घर पे ही है। डीएसए कर रहा हूँ मैं, डीएसए डीएसए डीएसए। अभी आ रही है आवाज? चेक मारो चेक मारो चेक। आवाज आ रही है? ओके, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। मूव ऑल नेगेटिव एलिमेंट्स टू वन साइड ऑफ द given an unsorted array having both negative and positive. The task is to place all negative elements in the end of the array without changing the order of positive elements and negative elements. तो हमें सारे को ऐसे करना है, ठीक है। Do not return anywhere, just in place. Okay. Oh, oh, आपके आइस पे जितना अगर मैं फोन चलाऊं और ये इजी तो है वैसे। पेन कहाँ गायब हो गई? 1 - 1, 3 2 - 7 + 5 11 और 6 पॉजिटिव पे रख दिया। यहाँ पे नेगेटिव पे रख दिया, यहाँ पे पहला पॉजिटिव। अब आइट्रेट करेंगे यहाँ से यहाँ से, ये आया नेगेटिव, इसको हटा के ना, रॉन्ग, पहले ही रॉन्ग। जितने प्यार पूरे दिल से हो हो। ऑक्सिलरी स्पेस भी दे रखा है। देखो, अगर ऑक्सिलरी स्पेस दे रखा है तो बहुत ही आसान है, तो ये समझ रहे हो ना। यहाँ पे मैं वेक्टर अगर बना लूँ तो पूरा पूरा खत्म हो जाएगा। समझ रहे हो ना? ऑक्सिलरी स्पेस अगर दे रखा है तो मैं भूल गया हूँ ये थोड़ा, ऐसे लिखते हैं। आगे बढ़ो। हाँ, आ रहा है आ रहा है। सपना जितना है, प्यार पूरे दिल से। इजी है भाई ये तो, पर ऐसे तो इजी है। समझ रहे हो क्या? समझ रहे हो क्या? ये फॉर सिंटैक्स लिखना पड़ेगा। और लुक फॉर वेक्टर, कैसे था मैं भूल गया, मैं थोड़ा सा आइटरेशन मुझे करना हो। तो नहीं, ये तो ठीक है।
इंट सही 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 है अपना सिंटेक्स, कोई दिक्कत नहीं। मैंने मैक्स कर लिया। अब एटो में नेगेटिव पुश कर रहे हैं हम, तो बाद में डालेंगे, पहले इवन और इन नॉन इन फेवर यार। ये थोड़ा सिस्टमेटिक करना पड़ेगा। ये क्या है, ये क्या है? ओह, हाउ टू इनिशियलाइज अ वेक्टर भाई, पूरा सी प्लस प्लस भूल गया हूँ। आओ देखा जाए। सही तो है। तो यार मुझे पुश करना हो तो मैं कर सकता हूँ, है ना? जब आइस अच्छा, ये क्यों ऐसा बोल रहा है? पुशबैक ओ, पुशबैक होता है रे, पुशबैक होता है। कैसे बोल सकता हूँ? माय बैड। इतना सारे लैंग्वेजेस पढ़ लिए कि यार समझ नहीं आ रहा है। समझ रहे हो? समझ समझ के परे हो रहा है। देखो होने को तो हो गया ये प्रॉब्लम, है ना? पर इसके कमेंट्स में जाकर हम सॉल्यूशन देखते हैं सी प्लस प्लस के लिए। ये तो हो गया। सेम ही है, मैंने ये किया है, पर ऑप्टिमल सॉल्यूशन देखना है हमको। ऑप्टिमल सॉल्यूशन में क्या है? पंप पंप कर रहे हैं वो तो, फिर वही चारा बना के कुछ कर दिया। नो नो, ठीक है छोड़ो। अब हमारा प्रोग्रेस बार को 5 कर देते हैं, है ना? ये सारे इसको हटा दिया। You are given to arrange the meaning of both the arrays in the, तो auxiliary space बताओ थोड़ा। n plus n सच में? ये तो पॉइंटर लगा के ही हो जाएगा। हाँ। हम्म, हम्म,
unnecessarily destroying, but not necessarily destroying. Mhm.
प्रोग्रेस अपडेट किया जाए दोस्तों। प्रोग्रेस हो चुका है हमारा छः। छः छः छः। Given an array, यार, I rotate the array by one position in clockwise direction. टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मैंने क्या दिया? पर बेटा पहले ही दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है ना। हम्म,
You are given an integer ARR, you need to find the maximum sum of sub-array containing at least one element. A sub-array is a continuous part of the array. Okay, 5 जैसे ही नेगेटिव है उसको 7 because अगर मैं इसको ले रहा हूँ तो ये नेगेटिव पाएगा तो मुझे 0 करना ये रहेगा और ना हाँ सही है करेक्ट कर रहा हूँ क्या मैं करेक्ट जा रहा हूँ कस्टम देख लेते हैं है ना
लेट्स ट्राई टू सबमिट इट। क्या आता है रिजल्ट? ओह नाइस, कर दिया हमने। डैम son, हम तो क्रेजी कर रहे हैं आज। भाई मेरे लिए कंटेंट स्विच लग रहा है, कर रहा है। हाँ भाई, पाइथन कर लो। कर लूँ? भाई कर लो भाई पाइथन। बिल्कुल करो भाई। बिल्कुल करो। बिल्कुल। हमने कितना कर लिया था प्रॉब्लम्स? कदाने एल्गोरिदम के हमने एक दो तीन चार एक दो तीन चार 8 प्रॉब्लम्स कर लिए हमने, प्रोग्रेस सबमिट किया हुआ। 8। हर दिन 10 प्रॉब्लम करना है। बेसिक पढ़ लिया। भाई पाइथन प्रैक्टिस कहाँ करें? पाइथन प्रैक्टिस कहाँ करें मतलब तुम्हें पाइथन प्रैक्टिस किस चीज में करना है? वो भी तो तुम्हें जाना कहाँ है वो बताओ, पाइथन को लेकर। उसके ऊपर है। बेसिक पढ़ लिया है। पढ़ लिया है तो अच्छा है। पर तुम्हें पाइथन से करना क्या है वो बताओ, उसके आगे हम कुछ कर बोल सके। मेरा आवाज आ रहा है क्या? आ रहा होगा। हम्म। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Given an array denoting height of n towers in a positive way, for each tower you must perform exactly one of the following operation exactly once. Increase the height of the tower by q, decrease the height of the tower by q. Find the value of the difference in the height of the tallest tower. Shortest. Yes, then. Oh, got it. करके है ए 5। अरे। हम्म। नाइस। डिसाइड करो कहाँ पे। There can be modified as 3 plus k, 9 plus k, 12 minus k, 16 minus k n। ओके, तो हम क्या कर सकते हैं यार? जिन दोनों के बीच का डिफरेंस k से बड़ा हो और क्लोजेस्ट हो। राइट। अगर किसी के थ्री प्लस के, 9 प्लस के, 12 माइनस के, 16 माइनस के, अगर हम बोलें k से बड़ा हो डिफरेंस, या फिर एग्जैक्टली k या फिर k से बड़ा डिफरेंस है। एम आई राइट?
यस, अगर के या फिर के से बड़ा डिफरेंस है तो हम इसे क्लोज लाने की कोशिश करेंगे। अगर के से छोटा हो, है ना? लेट्स से और वे शॉर्टेस्ट स्टार है। शॉर्टेस्ट स्टार को और देखते हैं ना, तो पहले वन ये तो क्या किया जाए, क्या किया जाए? It is compulsory to decrease and increase and after that the resultant arrow should not contain any negativity. If negativity there is a result. Okay. हाँ, tricky question है। डिसाइड करो भाई। ऑडियो मैशअप की लग रहा है, ऑडियो मैशअप इसलिए लग रहा है क्योंकि मैं सब कुछ ईयरबड्स से ही हो रहा है, आवाज भी बचे जा रहा है और आ भी रहा है ईयरबड्स से ही। नो सेटअप। Difference between the large and the small is 8 minus 3. 3 9 plus 3 20. 2 plus k 9 plus k 10 minus k 16 minus k 20 minus k. It's 12 9 13 कैसे बनेगा? So the difference between large and small is 17 minus 6. हम्म, okay. तो इधर तो प्लस ही करना है और हमें से लार्ज में से माइनस ही करना है। ये तो फिक्स है। और अगर किसी का डिफरेंस ना ऐसे डिफरेंस पे भी छोड़ो अगर ना फिर भी minimum possible difference between the height of the shortest and the tallest tower after we have modified modified किस हिसाब से करना है वो बाकी तो नहीं तो एक लॉजिक लगता है कि अगर के मायने से छोटा तो कंपल्सरी इंक्रीमेंट है। ठीक है। और इसके बाद शॉर्टेस्ट टावर का जाइए। एक शॉर्टेस्ट और दो वेरिएबल अगर हम सेट कर लें और सब पे ऑपरेशन कराते जाए तो क्या लगता है? और ये आई थिंक सॉर्टेड है क्या ये? हम्म, तो कुछ करना पड़ेगा। क्या किया जाए बताओ? समझ में नहीं आ रहा है। You must perform exactly one of the following operations exactly once. Find out the minimum possible difference between the height of the starting and the published hours. Sorry.
Mm, Paris Tower units perform exactly one of the following operations exactly. You can find a slight modification of the problem. It is a complementary increase. Let's check hint, boys. Let's check the hint. The idea is to sort all the possible heights of every tower in increasing order and to use quantum and better range on towers are included. Really? Ah, oh, oh. हम्म, अगर स्मॉलेस्ट में इसका घटाना है तो obvious सी बात है लेकिन समझ रहे हो हम्म, अगर मैं ये करूंगा तो बड़ा ही रहेगा बराबर 6 12 9 13 17 ये कहाँ जानते हैं ये मिनिमम करना है ना हमें और हर बार कुछ ऐसा है आगे समझ लो 4 5 6 7 तो क्या होगा ये आएगा कि अभी 4 था ये 5 हो गया ये 6 हो गया ये 7 हो गया ये 8 हो गया 8 8 ये 8 हो गया है ना ये 8 हो गया हम्म, ये 8 हो गया और ये 9 हो गया लेकिन स्मॉलेस्ट अभी भी 8 है ना स्मॉलेस्ट लाना है स्मॉलेस्ट अगर लाना है तो क्या हमें सारी पॉसिबिलिटीज देखनी चाहिए क्या लगता है दोस्तों तुम्हारा क्या कहना है अ, क्या लगता है तुम्हें
तो थोड़ा सा हम क्या करेंगे ना। और एक हिंट है क्या? The idea is to sort all possible height of every tower. Hmm. Oh, एक ये बनाता हूँ। ठीक है। आइडिया क्या है कि सॉर्ट ही करना है। सॉर्ट करना है भाई, सॉर्ट लगाएंगे।
क्या किया जाए दोस्तों बताओ। पहले सॉर्ट कर लिया, लॉन्गेस्ट में ले लिया, शॉर्टेस्ट में ले लिया। आंसर तो पहले यही है। फिर उन्होंने किया, फॉर लूप चलाया वन से वन तक, फॉर सम रीजन। लॉन्गेस्ट ले लिया मैक्स, और ओके, ये ये प्लस ये, शॉर्टेस्ट ले लिया इनमें से मैक्सिमम, ये मेरा मैक्सिमम, और शॉर्टेस्ट ले लिया मिनिमम ई प्लस जीरो, मैंने फिर से ये प्राइम माइनस के, एक रेंज ढूंढ रहे हैं। ठीक है, फिर हम यहाँ आ गए। अच्छा, यहाँ आए। हमने किया, एक मिनट, हम यहाँ पे ही थे। एक ट्रिकी क्वेश्चन है थोड़ा सा, ये सोच के करेंगे। ठीक है, समझने की समझ तो कुछ समझ के समझो। ठीक है, 6 0 12 6 15 9। ठीक है, तो अब हमने क्या किया है, सॉर्ट कर दिया। ठीक है, सॉर्टेड। अब लोएस्ट है मेरा ए ऑफ जीरो प्लस पी यानी 6, और लार्जेस्ट है मेरा ये। ठीक है, और आंसर है मेरा अभी 17, और ये लोएस्ट है और ये लार्जेस्ट है। अब हम जाएंगे जीरो से एन माइनस वन, हम जीरो से एन माइनस वन पे गए, तो मिनिमम होगा मेरा लोएस्ट, लोएस्ट मेरा ये, या तो फिर और प्लस इनका माइनस थ्री।
इसमें से जो भी लोएस्ट होगा वो मेरा मिनिमम हो जाएगा। हाँ बताइए। और लार्जेस्ट होगा वो मेरा जो लार्जेस्ट ये या तो फिर ये। ओके। और हम बस ऐसे ही रेंज ढूंढते ढूंढते ओ ना या तो आंसर ये रखो, स्टार्टिंग में लोएस्ट ये रखो, हाईएस्ट ये रखो। फिर क्या करो, फॉर लूप चलाओ 1 से n तक। फिर क्या करेंगे, अगर शॉर्टेस्ट ढूंढना है, शॉर्टेस्ट। तो ये मैनेजमेंट का ये और ये में से जो भी है तो वो इसमें से करेंगे। ठीक है। गॉट इट। ये में से जो मिनिमम होगा वो ये होगा, या तो फिर ये या तो ये। तो प्लस 7 माइनस ये या तो ये। हम्म, 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 हम्म। आंसर ये है, लेकिन शॉर्टेस्ट वैल्यू लार्जेस्ट वैल्यू आई है। शॉर्टेस्ट क्या होगा 50 और लार्जेस्ट क्या होगा ये, लेकिन ये चेंज होगा आगे देखिए। गॉट इट। 50 से इंक्रीमेंट होगा और शॉर्ट टेबल में तो इंक्रीमेंट होने की लार्जेस्ट ये है। अब मेरा आई का k प्लस 1 पे और फिर लोएस्ट मेरा अभी क्या 50 है। लेकिन जैसे मेरा हाई इधर जाएगा तो ये इसे चेक कराएगा कि क्या हाई बराबर गया। तो इससे चेक करेंगे और लार्जेस्ट। गॉट इट। वट एवर इज लार्जेस्ट, फिर ये इधर आएगा तो ये लार्जेस्ट हो जाएगा। फिर हम इधर जाएंगे, इधर जाएंगे माइनस के 52 होगा लास्ट। तो 52 नहीं हो पाएगा, अभी 50 ही रहेगा। लेकिन लार्जेस्ट जो है लार्जेस्ट, ये लार्जेस्ट होगा, ये लार्जेस्ट होगा। तो फिर मेरे जो लार्जेस्ट है वो यही रहेगा, स्मॉलेस्ट ये, लार्जेस्ट ये। ना 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 ना।
अब हमें कुछ नहीं करना है, हमें लिखना है int ans is equal to यार आ रहा हो यहाँ पे एक int n दे देंगे गाइस ठीक है जो होगा मेरा m minus 1 और ये रहा c int largest होगा मेरा ये आ रहा n minus 1 minus c int shortest होगा मेरा ये आ रहा 0 plus k for int I is equal to 0 से लेकर हम चलेंगे n-1 तक i प्लस प्लस कर दिए और हम करेंगे शॉर्टेस्ट इक्वल टू मैक्स हमने शॉर्टेस्ट में मैक्स ही किया था हमने करना क्या है हम मिनिमम लेना चाहिए ना आगे वाले जितना है मैक्स ऑफ शॉर्टेस्ट shortest I plus 1 का k सही if माइनस की आनी चाहिए फिर यहाँ पर शॉर्टेस्ट के लिए हमें मिनिमम यूज करना है और इसके लिए मैक्सिमम यूज करना है हो गया हूँ भाई लोएस्ट लोएस्ट इज नॉट सॉल्यूशन मिनिमम मैक्सिमम सॉल्यूशन हर बार हर बार हर बार हमें रेंज ढूंढना है लोएस्ट हमारे लिए ये हमारे लिए तो हम क्या कर रहे हैं कि जो मिनिमम है वो लोएस्ट और आई प्लस 1 का माइनस इसमें से जो भी मिनिमम वो उठा रहे हैं क्यों क्यों तो इंक्रीमेंट इतना पूछेगा कि देखिए इससे बड़ा नहीं हो सकता मैं इसका इसके it will always be less than this इन दोनों में से हमने अगर ये उठाया और इन दोनों में से मैक्सिमम
तो कुछ नहीं है, तो तुम ये कर दो तो सारा रेंज आ जाएगा। समझ रहे हो बात को? मैक्सिमम मिनिमम वाला हमें मिल गया। जो रेंज है ना, इन दोनों में से छोटा लेना, इन दोनों से लो, है ना? ठीक है, लेट्स चेक मिनिमम। अभी क्या है मेरा, ये है मिनिमम। मिनिमम लोएस्ट आंसर है मेरा ये, और लोएस्ट है प्लस पे, ये रहा मेरा लोएस्ट, और ये है मेरा माइनस। ठीक है, लोएस्ट मेरा ये और लार्जेस्ट मेरा ये। अब मैं फॉर्मूला चला रहा हूँ यहाँ से यहाँ तक। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे हूँ मैं, ठीक है। मिनिमम होगा मेरा माइनस के और इसके बीच का लोएस्ट, तो 50 आया minimum, ठीक है। और मैक्सिमम होगा मेरा इससे और इसका मिनिमम, जो कि होगा मेरा 53, ये मेरा लार्जेस्ट है। ठीक है। अब वापस फिर मैं यहाँ, अब मैं दूंगा इसका, ये देखो 50 ही होगा क्योंकि यहाँ का है, माइनस करूंगा 50 ही होगा। लार्जेस्ट, लार्जेस्ट देखना है मुझे, यहाँ पे 53 है लार्जेस्ट, और इसका आई का ये लार्जेस्ट यानी 150, तो जिसने ये जीत गया, तो ये 150 है। फिर मैं आगे गया, आगे गया, तो मैंने देखा 52, 52 शॉर्टेज, 52 और लोएस्ट 50, फिर 50 जीता, 150, तो 151 जीता। तो हम ऐसा करके गए, पर हम इसमें रहे क्योंकि लोएस्ट और लार्जेस्ट इज ऑलरेडी सेट, लोएस्ट और लार्जेस्ट अगर ऑलरेडी सेट है, तो हम क्या कर रहे हैं, सारी रेंज को लेके आए। हम्म, ये जो है लोएस्ट मेरा है 3, 3 है ना, तो अगर इससे, लोएस्ट यानी कि 3 ही है, तो इससे छोटा कुछ भी नहीं है, भले के को माइनस पे। और लो, और ये मेरा लार्जेस्ट है ना, लोएस्ट है, लोएस्ट है 53, 53। तो कुछ ऐसा लेके आओ जो 53 से छोटा हो, और कुछ ऐसा लेके आओ जो लार्जेस्ट से बड़ा हो, है ना? तो अगर कुछ ऐसा ला रहे हो तो तुम रेंज में ही हो, क्योंकि बीच में इंक्रीमेंट तो 50-50 का ही है। Am I correct? Am I correct? क्या मैं रेंज सही पकड़ रहा हूँ क्या? ये और ये, क्या मैं सही पकड़ पा रहा हूँ? फिर हम क्या कर रहे हैं कि इससे छोटा ले रहे हैं ताकि हम ये कर पाए। इससे छोटा 50 है, तो 50 शॉर्टेस्ट हो गया, और लार्जेस्ट ये तभी 153 है। ठीक है, यहाँ पे दीजिए
और लार्जेस्ट लार्जेस्ट वाज 153। ठीक है। अब हम यहाँ आ गए। यहाँ आ गए। हाँ, सही है। अब हम यहाँ आ गए। 51 मिला। अभी 50 है और 50 देखा तो अभी 153 थी। अब हम यहाँ आ गए। 52। 52 फिर से लार्जेस्ट है 53 बराबर 153 है। ये 50 है तो 51 देख रहे हैं, इसका आंसर हमेशा 53 में है। हम्म, नो 100 ही होना क्योंकि और कोई कर नहीं सकते। दिस इज हाउ इट विल गो। अब समझाओ एक और बार भी। एक और बार हम करेंगे गो थ्रू पेज का, है ना। यस। यस। ओके। तो हम क्या कर रहे हैं, थर्ड पे हैं हम समझिए। ठीक है। ओके हम 310 102 एंड 103। तो अगर हम 53 पे है तो 53 150 50। ठीक है। 151 51 152 52 153 53। ठीक है। तो अगर हम समझ लो 3 है और यहाँ पे है तो अभी सबसे पहले लार्जेस्ट क्या होगा, लार्जेस्ट हमारा ये होगा, सॉरी लोएस्ट। लोएस्ट ये होगा और लार्जेस्ट होगा हमारा ये। सही है। हमारा करेक्ट। हमारा करेक्ट दिस इज द लार्जेस्ट राइट नाउ। ओके तो हम इस पे आए। ये दोनों में से मिनिमम क्या है, 50 है। सो 50 विल बी मिनिमम एंड लार्जेस्ट लार्ज विल बी 53। अब अब हम इस पे आए। व्हाट विल बी 50 स्टिल 50। व्हाट विल बी द लार्जेस्ट 150। Okay. No, again, what will be the lowest 50 and what will be the largest 151. Again, you come here. If you come here, you say 50 is the smallest, you have 2. Then we can come, then we go there. No, no, we should not go higher than this. Largest है तो higher जाना ही नहीं है, क्योंकि मतलब नहीं है कुछ। और lowest नहीं यहाँ पे मिलेगा, इसलिए हम lowest हमेशा इससे compare कर रहे हैं। और ये हर बार हम इसका डिफरेंस निकालते जा रहे 100 ऑलवेज। तो पहले बार में हमारा मिनिमम जो निकलेगा लार्जेस्ट से 53 और 53। हमें मैक्स मैक्स तो हमें चाहिए ही चाहिए कि हमें सारी रेंज पता है। नहीं से होता 200 होता 200 होता फिर 300 होता और ये 4 तो 3 और 5 और तो ये तो इसमें आ ही जाता इसके बाद सही है और सही है। तो हमें करना ये है कि ये जो लास्ट है इसको हम आंसर मेरे को सही पर रखा है हमने बिल्कुल। अब हमें करना है कि आंसर है इसका मतलब मिनिमम शुड बी मिनिमम ऑफ द लोएस्ट एंड ARR R plus 1
माइनस के बराबर and int max max of largest I plus k or if minimum or less than zero जाता है तो कंटिन्यू करेंगे समझ रहे हो? और हम कुछ नहीं करेंगे ये जो मेरा आंसर है उसका आंसर मैक्सिमम कर देंगे इनक्लोज ये क्या है और और nice. Nice. Let's update our progress, guys. Let's update progress update here. Nice. अब अब हम जाएंगे अगले सवाल minimum number of jumps to reach the end of the array. You are given an array of non-negative number. Each number tell you the maximum steps you can jump forward from. For example, अगर I am 3 you can jump to index I plus 1 I plus 4 I plus 3 from the position. Okay. The condition वाला है you are tasked to find the minimum number of jumps you need to move from the first position in the array to the last position. Return minus and point will go. Okay. First jump from first to second, 23. Gila, 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 gila. That's the phenomenon of the last jump to the first position. तो अगर एनिमेशन मिल जाता है
हम्म, तो जंप कितना मारना है और हम करंट इंडेक्स 0 पे है। हमें रीच कहाँ करना है? हमें रीच करना है ARR और -1 पे। तो फिर यही रखते हैं और हमें ये कितना करना है? जंप हमें करना है आई। आई का जंप लेना। पूरा समझ में आ गया मुझे। या सकते रिजल्ट। ठीक है, आज हम जाएंगे हल्का मेथड बनाएंगे ऊपर। ठीक है, इसके अंदर हम पास करेंगे एक तो पोजीशन, आइडियल या फिर पॉज, करंट पॉज। ठीक है, और ARR वेबसाइट यानी गोल और जंप। जंप है ना? ए
और एक जंप में लिखना पड़ेगा। जंप कितनी मारी है, एक एक तो मारी ही है ना। एक 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 तो मारी है। जंप स्टेप लिख देते हैं। पोजिशन प्लस जंप स्टेप। रिटर्न जंप्स। सही। लेकिन हाँ हाँ, if jump step equal to 0, लेकिन चुपचाप माइनस है ना। तो कोडिंग नहीं कर सकते। तो कुछ नहीं, अपने को ये करना है। ठीक है, यहाँ पे इंट चलाना है, रन करना है। ARR देना पड़ेगा।
ARR देंगे क्या चल रहा है चैट में कुछ आया ARR देना पड़ेगा ARR पोस्ट प्लस जंपस्टर
मेरा अप्रोच सही था और वो नहीं हुआ। क्या बोलते हैं? अप्रोच सही था पर पर्सन को नहीं किया था। मैक्स रेंज बढ़ती जाती रहे जाती रहे। आह, test whether we have reached the end of the array. In that case, we just need to return the job variable. ठीक है? With overall zero and the jumps with now start iterating from next one. Okay, why? Next, we update the max range. It is equal to maximum max range and I plus ARR of I. Hmm. Use up a step to get the current index. So step has to be the key step.
कैसे किया जाए इसको? हम्म, अच्छा, से
अब सही हो गया होगा आई थिंक। अब देखो। हेलो 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 हेलो। ठीक है। कैसे 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 किया है?
मुझे नहीं तब तक छोड़ेंगे ना, समझ ना, समझ नहीं जाएंगे। लेकिन 5 टाइम एक लड़की मैक्स रीच होंगे तब जीरो होगा। यार मेरे यहाँ से रिजल्ट मेरा प्लस प्लस होगा। इंडेक्स मैक्स रीच से बड़ा हो जाए
तो रिटर्न -1 कर दीजिए, ये क्या लॉजिक है? फर्स्ट स्टेप, या मेरा मैक्स रेंज जो कि 4 है और माइनस आई, स्टेप मेरा 3 हो गया। हाँ भाई, इसका वीडियो ही देखना पड़ेगा हमें। ये हमसे ना हुआ, ये हमसे ना हुआ। फुल सॉल्यूशन ना हुआ, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए हमें प्रॉब्लम का वीडियो चाहिए। ये तो ठीक है, तो छोड़ो, सॉल्यूशन का। हाँ, मिनिमम जम्प। So let's continue with our greedy algorithms playlist. But before that, hey everyone, welcome back to the channel. I hope you guys are doing extremely well. So the problem that we will be solving today is jump game. So you'll be given an array which will have integers. And the problem is stating, you'll be standing at the first element. And every element tells you how much maximum you can jump. For an example, if there is 2 over here, it means you can jump to this place or you can jump to this place. Not beyond it, not beyond 2 places. If there is 3, you can jump here, you can jump here, you can jump here. And the problem is asking you, if you're starting at the first element, can you reach the last element by jumping? Let's try it out. Over here, we have 2, right? Which means I can take a jump of 2, a maximum jump of 2. So if I go here, there is a jump of 1. So I'll go here and I cannot jump further, which means I cannot. But the question is stating maximum that you can take. I shall not jump the maximum. Instead, I'll jump by 1 place. And from here, I'll jump 3 places. So eventually, you cannot cross 0. I can either go to this one, I can only go to that, to this, or I can go here. So eventually I can reach the last, right? It's important that you can cross the 0, right? So this is what you'll have to do. Given an array, you have to tell me if you can reach the end or not. How do I solve this problem? Let's take this example. If I start from 1, where can I reach? I can reach this place. The maximum that I can reach is this place. If I start from 2, I can either go to this or I can either go to this one. Perfect. If I start from 3, I can either go to this one or I can either go to this one or I can either go to this one. Perfect. If I start from 1, I can either go to this one, I can only go to that one. If I start from this one, I can go to this one. From 0, I cannot go to anywhere. If I cannot go from 0, if I cannot go anywhere, I stop then and there because I'm not able to reach here. I tried all possible combos. You can try out all possible combos. You cannot cross 0. Thereby, it is not possible. Thereby, it is not possible. Let's change these examples and try out one more example. I'll change this 3 to 4. Okay, now let's try out. From here, I can go here. From 2, I can go here or I can go here. From 4, I can go here, 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 and here as well. Okay, from 1, I can go here. From 1, I can go here. From 0, I don't need to go anywhere. From 2, I can either go here or I can either go here. So what I can see is I can actually reach the end. If I take this pattern, sorry, my bad. If I take this pattern, and then this, and then this, I can actually reach the end. So it is typically possible. But tell me one thing, did you observe something? What if the arrays don't have a 0? What if the arrays don't have a 0? For that case, we'll always be able to reach the end. If the array just has positive integers, we'll keep jumping, There is no stopping us, right? And we will be able to reach the end for every possible scenario, right? Okay, so how do I solve this particular problem? It's going to be super simple. The only thing I have to see is whenever I'm reaching an index, did someone reach me? Did someone reach me? For an example, the 1 reached here, 2 reached here at max, 4 reached here. So when you are at 2, 4 can come here. So someone did touch you. Got it? That's what my intention would be. And if there was a 3 here, no one would have touched 2. That means you cannot reach there. Let's see how I can solve this. What we will do is we'll say, okay, what is the max index till which we have gone till now? Initially at 0, so we haven't gone anywhere. Okay, perfect. So we're standing at here and we are at this place. So over here we have one place we can jump. So the max we can go is till 1, not beyond it. Perfect. Next we come to this index. And to ease out understanding, I'll write down the index numbers. Perfect. So we are at 2. From here, where can I go? 2 places more. I'm standing at 1. I can go to 2 places more, which makes it to the index 3. So the max I can go is to the index 3. Perfect. Next, I can go to 4. 4 means I'm standing at the second index. 2 plus 4 is 6. I can go a max of 6. Perfect. Next, I'm standing at 3. I can go a 1, which is 4.
No need to update max because I can still reach 6. I can still reach 6. Perfect. Next, I can go to this one, which is a 1. Standing at 4. 4 plus 1 is 5. And I can still reach 6. So I don't care. I don't care. I'm at 0. Got any more. I'm standing at 1. I can go to 2 places more, which makes it to the index 3. To the index 3. So the max I can go is to the index 3. Perfect. Next, I can go to 4. 4 means I'm standing at the second index. 2 plus 4 is 6. I can go a max of 6. I can go a max of 6. Perfect. Next, standing at 3, I can go a 1, which is 4. No need to update max because I can still reach 6. I can still reach 6. Perfect. Next, I can go to this one, which is a 1. Standing at 4. 4 plus 1 is 5. And I can still reach 6. So I don't care. I don't care. I'm at 0. 5 plus 0 is 5. I can still reach 6. I don't care. Next, I have a 2. 6 plus 2 is 8. And you can stop over there. You can stop over there because you have somehow crossed this. And if you have crossed this, that means you can definitely reach the index 7. You can definitely reach the index 7. So I'll just go back. I'll change the example so that you understand when is it not possible. Okay, so we stand over here. My bad. Yeah, we stand over here. Vector. And I can erase this. I can convert this to 3. Now let's understand how this works out. So we're standing at 1. Okay, so the max that I can reach is the index 0 plus 1, which is 1. Okay, perfect. Next, I have a 2. So the max I can reach is 1 plus 2, which is 3, which is 1 plus 2 is 3. Perfect. Next, I can go to the next, which is 3. So I can go from 2 plus 3, which is 5. Okay. The next is 1. 3 plus 1 is 4. Well, I don't care. Next is 4. I can go at max 1. So that's a 5. I don't care. I've already reached 5. Next, I reach 5. 5 plus 0 is 5. I don't care. Next, I reach 6. And this is where I say, hey, wait. The max you were able to reach was 5. How did you come here? As a person, you cannot arrive here. You cannot. Understood. Return false, return false. Simple, right? So I have to write down the code. Again, I'll be writing down the pseudocode in case you want your language specific code. It's given below. Pseudocode, not any language specific code. So I'll be writing down the function. So you're typically given the array, correct? You can figure out the size of the array by array.size. Where do I start? I start at the 0th index, correct? And what I can do is I can go ahead and say I equal to 0 and I can get on till n minus 1. One thing I know is, hey, listen, if you haven't reached, if I is greater than max of index, if you haven't reached me, that means you cannot jump from here. So thereby you can straight away return false, correct? Apart from it, can I say max index can always be updated to max of max index comma I plus array of whatever jump is given to you. I can. And at any moment, or maybe you can just skip it. You can write if max index at any moment is greater than equal to n minus 1, you can stop. And if this condition, remember, if this condition never happens, which means you're able to reach the last index, thereby you can straight away say return false. Return true. To optimize, you can definitely insert an if condition. In case during the journey you were able to reach, you can put an if condition over here. That will be it. What is the time complexity? Big O of n. What is the space complexity? Big O of 1. That's it. This is the most optimal solution. Again, I was greedy. At Mesa School's undergrad program, we are looking for only 100 special high schoolers who will undergo a unique 4-year journey of. So let's continue with our greedy algorithms playlist. But before that, if you're back to the channel, I hope you guys are doing extremely well. So the problem that we will be solving today is jump game part 2. In case you haven't seen my part 1 video, please go back and watch it. So what is the part 2 stating? It's stating that you will be standing at the first element. You're given an array. Every element tells you what is the maximum jump that you can take. For example, if it is given as 2, you can jump till here, either of them. There's the maximum that you can take, so you can jump to either of these elements. Now the question is, tell me the minimum number of jumps that it will take to reach from the start till the end. From the start till the end. And it is guaranteed that you will reach the end. It is guaranteed. The test cases are given in such a way that you will definitely reach the end. In the part 1, the question was, will you reach the end? Over here, the question is, tell me the minimum jumps that you will take to reach the end. Got it? So what will be the answer for this particular test case? What I can do is from here, I can jump till here, which is a jump, single jump. From 1, I can take one more jump, which is another jump. From 4, I can directly jump to the last. So I'm taking 3 jumps, right? So I've taken 3 jumps, and this is going to be the answer. Minimum jumps. You can try out all of the possibilities, and 3 is the minimum answer that you will get. Now, if this problem comes up in an interview, what is the extreme range solution that you can think of? I know one thing. Starting at the 0th index. And there are 2 possible ways. One is this, one is this. From here, there are 3 possible ways. So every index has different ways. Can I try out all these? Yes, I can try out all ways. And then can I pick the minimum of all of them? I can, right? So what I will do is I'll just take a smaller example. Let's take a smaller example, which is 2, 3, 1, 1, 4. Can I say, I can start at the 0th index. I'll be trying out all possible ways. And you know how to do it. Recursion playlist, remember? I'll be starting with the 0th index. And the number of jumps that I would have taken as of now is 0. What I can do is, I know I'm allowed to take at max of 2 jumps. So I'll take a jump of 1, I'll reach the index 1, and that will be 1 jump. Or I'll take 2 jumps, I'll reach the index 2, and that will be 2 jumps. From here, there's 3 given to you. So maybe I can take 1 jump, maybe I can take
Hello everyone, my name is Karan Masu. Welcome to this video. In this video, we are going to look at the solution of the problem, that is minimum number of jumps. First of all, let us start by understanding the question. What does question say? Given an array of n integers array where each element represents the maximum length of jump that can be made forward from that element. This means if array of I is x, then we can jump any distance y such that y is less than equal to x. We'll have a look at the example, things will be more clear. Okay. Find the minimum number of jumps to reach the end of the array, that is last index, starting from the first element. It means initially you are at index 0. If an element is 0, then you cannot move through that element. So basically, if let's say I'm currently at the ith index and the value at the ith index is 5. So starting from that ith index, I can make a jump of either 1 or 2 or 3 or 4 or 5. Maximum I can make a jump of 5. So from ith index, I can go to I plus 5 maximum. Then from there, I can see the value at that index and again make the move accordingly. And in this way, starting from 0th index, I need to reach n minus 1 index. And it might be possible that if from a particular index, the value at that index is 0, it means you cannot make a jump from that index. Then in that case, if let's say if you are not able to reach the last index, that is n minus 1, in that case, you might need to return minus 1. Okay. And what you need to find is find the minimum number of jumps to reach the end of the array. So now, depending upon different configuration and different combinations, the number of jumps required to reach the end might be different. So we need to tell in the optimal case what are the minimum number of jumps required to reach the end. Okay. Return minus 1 if you can't reach the end of the array. For example, if you have total 11 positions and here the number of jumps required are 3. So from the first jump from first element to the second element, so from here you will come here with value 3. Now from here we jump to the fifth element. From 3 we go here because we can make a jump of either 1 or 2 or 3 because here the value is 3. So I go to 9. Now from here we jump to the fifth element with value 9, and from here we will jump to the last element. From here I can make a jump of at max 9. So I can make a jump of 1 or 2 or 3 or 4 or 5 or 6. So what I can do is from 1 I can go to 3, from 3 to 9, and from 9 I can go to this 9. So in 3 steps I reached n minus 1. That is the optimal. So output is 3. Similarly, you can have a look at this example. The output is 2. You don't need to read input or print anything. Your task is to complete the function minimum jumps, which takes the array and its size n as input parameters and returns the minimum number of jumps. If not possible, then you need to return minus 1. The expected time complexity is big of n and expected space complexity is constant. So now see here there are various methods to solve this problem, but since here the expected time complexity is big of n, so I'm going to discuss that method only. So what here we will do is, and the auxiliary space is constant. So here what we will do is we will maintain that from the current jump, what is the range of elements that are accessible. Okay, from the last jump. And once we have exhausted that range, we need to make a new jump. In order for that new jump, what is the new range of elements I can access? So after one jump, what are the range of elements I can access? After two jumps, what are the range of elements I can access? Now the second jump can be from any of the elements which were accessible after the first jump. Okay, but we are not looking at that because we want the minimum number of jumps. We do not want the exact from where to where we jump. Okay, so after the first jump, what are the range of elements accessible? Then from there, what are the range of elements accessible? From there, with the help of third jump, what are the range of elements accessible? And we will see that the last element comes in which range? Minimum. Okay, which minimum range? Like whether it comes in the range of 3 jumps, then we will return 3. It might be confusing, but we'll write on this so you will get a very clear idea. So for example, here we have 1, 3, 5, 8, 9, 2, 6, 7, 6, 8, and 9. Now you see here, I will maintain a variable max reach, which will tell me what is the maximum reachable or what is the maximum covering index. Okay, right now it is 0 because I'm starting from here. Then I will also maintain one index, that is last index, which will be initially 0. What does this last index denote? It denotes what is the last index which you can access with this jump. So let's say if I'm if I made 2 jumps, so what is the last index which I can access by 2 jumps? Or if I made 3 jumps, what is the last index which I can access by 3 jumps? Because when I reach that index, last index, now I need to make a new jump. Are you getting my point? So that is for maintaining that. Okay, so one is max reach, one is last index, and one more thing which I need to maintain here is number of jumps. So initially that would be 0. Now I'm starting from here, right? So from here, see, what I will do is now I will iterate my I from here till here. Okay, now I'm at this index. So from this index, what is the maximum reachable index? This index. Okay, see, when I iterate my I, my max reach will be updated like this. Max reach is equals to max of. Are you preparing for coding interviews? Build your data structures and problem-solving skills with log-to-base. Max reach, comma, I plus array of I. Because max reach is the maximum reachable index we have found till now. Now you are currently at ith index, and from here you can make a jump of the value array of I. So till which index you can go? I plus array of I. Okay. So from here it is one size jump. So after one jump I can reach here. Okay. So my max reach will become one index. The last index which I can access through this max. So I will not be updating the last index right now. Okay. So let's not worry about that. And number of jumps will be increased by 1. Actually that also I will not increase it right now. So basically I'm trying to tell you the process. So I'm not increasing that right now. Okay. Now you see here what is your maximum reachable index. Now whenever your I is equal to last index, whenever your I is equals to last index, that is the time of making a jump. Why? Because what I told, I is the index which I'm moving one after the other and taking what is the maximum reachable index. What was last index? Last index was the index which I can reach which I can maximum reach by the number of jumps I've taken till now. Number of jumps taken till now is 0. The last index which I can access with 0 jumps is 0, and currently my I equals to 0. It means it's time to make a jump. So when you make a jump, you'll increment this count, and your last index will be the last index which is accessible after making one number of jumps. So after making one number of jumps, what is the last index accessible? 1. So this will become 1. Okay. Now you come here, your I comes here. This value is 3. So your max reach will become this is index 1, right? This is index 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. So your last index will become 1 plus 3, that is 4, because you can maximum reach till here, right? So this is your range of elements which you can reach. So max reach will become 4. Now is your I equal to last index? Yes. The last index was the maximum index which is accessible after one number of jumps, and currently I am at index I, that is 1 only. Now if I want to go at second index, I need to make a jump. So my number of jumps will become 2, and the last index accessible after making 2 number of jumps is how much? Is equal to the max reach. Is equal to the max reach which value now. So max reach value is 4, so it will become 4. Now my I will come here. Okay. Now my I will come here. Now max reach will get updated to what? This is index 2 and this is 5. So 2 plus 5 is 7. So I can reach till here. Okay. After 3 number of jumps. Okay. So this was after 1 number of jumps. This was after 2 number of jumps, and this will be after 2 number of jumps. Okay. So this will be after this. So after making second jump, you can reach till here. Now if you make a jump from here to anywhere, you can maximum reach here. This is what we have found till now. It may be updated, right? So max reach will become how much? 7. Now is your I equal to last index? No, your last index is 4. After 2 jumps, the maximum index which you can reach is 4. So and your I is currently what? 2. So 2 is not equal to 4. It means if you want to move from 2 to 3, you do not need to make a jump. In the current jump only, that is using 2 jumps, you can also reach here. So I'm not increasing the number of jumps. Okay. Now
From this, what is the max reach from here? This is 3 plus 8, that is 11. So this will be updated to 11. It means this value, after 3 number of jumps, you can access till index 11. Okay, because still we are observing the values which were accessible after 2 number of jumps. So this after 3 number of jumps, what maximum reach is available, that can get updated, right? So first it was here, now it got updated to 11 index, which is not there, right? Because we have only till 10 index. Now your I is how much? 3, and your last index accessible after 2 jumps is 4. So I do not need to jump. I can simply go here. Now from here the max reach will get updated to 4 plus 9, that is 13. It is saying that after 3 number of jumps you can maximum reach till 13 index. Okay. Now your I is 4 and the last index accessible after 2 number of jumps which you are accessing right now is also 4. So now it's time to make a jump, because now you are moving from this range to this range. So your number of jumps will become 3 and the last index accessible will become equal to max reach. Okay. So that will become equal to the 13, right? And as soon as this value gets updated and you see that the max reach is more than when you make a jump, and at that time if the max reach is more than or equal to n minus 1, it means now you do not need to traverse further. You can say that these are the number of jumps which are required. So if you closely observe, from here if you make a jump you come here, from here if you make a jump you can come in this range, and from here if you make a jump you can come in this range. So total 3 number of jumps are required for this. Okay, don't worry about the code, just understand the flow. When you look at the code you will be able to relate with the flow. Okay, now let's also look at this example, because in that case we will not be able to reach at the end, so we'll get a better idea. So it is 1 2 1 0 3 6 and 1. Okay, now you see here, from here you can only make a jump here. From here you can either make a jump here or here. Let's say you made a jump here or you made a jump here. Now from here also you can go till here. After reaching here, you cannot make a jump because this value is 0. So in that case, you cannot reach the end. You need to return minus 1. So now let's drive on this example. Okay. So let me write it again. So you have n equals to 7 and you have 1, 2, 1, 0, 3, 6 and 1. Now your max reach is how much initially? 0, because you have not made any jumps, and last index which is accessible after 0 number of jumps is 0, and the number of jumps is also how much? 0. So initially you are at this position. Okay, now your max reach will get updated to 0 plus 1, that is 1, and your index I is equal to last index, so it's time to make a jump, so your jump will become 1 and the last accessible index will become equal to max reach, so this will also become equal to 1. So now you are here. Now the max reach will become, this is first index and the value here is 2, so 1 plus 2 is 3. Now your last index is 1 and I is also 1. So if your I is equal to last index, it's time to make a jump. These are the elements which are accessible from the jump. So your number of jumps will become 2 and the last index accessible will become 3, because after 2 number of jumps you can maximum reach here, right? So your last index will become 3. Now I is equals to 1 and the last index accessible is this. So you move forward, right? You go here. Now I equals to 2. The max reach will remain 3 only, because this index is 2 and 2 plus 1 is 3. So 3 will remain 3 only. And this index is what? 2 and the last index accessible is 3. So you will not make a jump, right? So now you move on to the next index. Now here the max reach will remain 3 only, because 0 plus 3 is how much? 3 only. But here the I value is how much? 3 and the last index accessible after 2 jumps is also how much? 3. So it's time to make a jump. But if your I is equal to last index and it is equal to max reach, because see, when you make a jump, your last index gets updated to max reach. Now here I want to make a jump because I is equal to last index. So my last index will become equal to max reach, which is equal to 3. It means with I want to make a jump, but with 3 number of jumps also, I can maximum reach till index 3 only. I cannot go further. Why? Because here it is value is 0. And for all the values before that also, I was not able to move further this index 0, right? Where the value is 0. So what happened is my I became equal to last index, so I needed to make a jump. So I increased my jump count and my last index will become equal to max reach. And I assume that my last index will go further because my max reach will be more. But if max reach is equals to I, that is max reach is equal to current index, means with this many number of jumps, the maximum the maximum reachable index is I. Okay, but from I need to make a jump because I has become equal to last index, but max reach is also equal to I. It means I need to make a jump, but I cannot move further than this. So whenever my I equal to last index, but my max reach is equal to I, then my last index will not increase, and in that case, I will make my number of jumps equals to minus 1. I will break down the process because I cannot make a move, and I return minus 1. Okay, now let's look at the code. So if you look at the code, then I have taken max reach equal to 0, because initially when I'm at index 0, the maximum reachable index is 0. I've taken one flag variable, but that is of no use. You can neglect it. I've taken one variable I. Number of jumps is 0. Last index is the variable which is the last accessible index with the current number of jumps which we have. It is also initially 0.
हो गया। फिर पहला क्वेश्चन।